कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीएससी थर्ड ईयर 5वें सेमेस्टर बॉटनी के सेकंड पेपर के सोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो देखो, जब जनवरी फरवरी 2024 के अंदर ये एग्जाम हो रहे थे उस टाइम पे ये पेपर आया था। ठीक है, हम इसी के पेपर के सोल्यूशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बॉटनी का पेपर 1 है उसका सोल्यूशन पहले ही हमने अपलोड कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में सेमेस्टर 5 का लिंक दिया गया है, उसके अंदर जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस पेपर के बारे में। तो पेपर का हमारा टाइटल क्या रहता है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है तो पहले बात करते हैं सेक्शन ए की तरफ। इसके अंदर 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे। पहला क्वेश्चन क्या था? सुपरबग को डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइन करोगे? A superbug is a term used to describe a strain of bacteria that has become resistant to multiple type of antibiotics. These bacteria are partially dangerous because they are difficult to treat and can cause serious infection and may not respond to standard treatment. फिर जीन बैंक के बारे में बताना था। तो जीन बैंक आल्सो नोन एज जेनेटिक resource center or seed bank is a respiratory that conserves and stores genetic materials from various plant and animal species. The primary goal of a gene bank is preserve genetic diversity for future generation. ठीक है, फिर टी आर एन ए के बारे में बताना था। तो ट्रांसफर आर एन ए bring and transfer amino acid to the ribosome that correspond to each 3 nucleotide codon of rRNA. tRNA have a cover leaf structure which is stabilized by strong hydrogen bond between the nucleotide. Apart from the usual full basis, tRNA is the smallest molecule and is found in the cytoplasm of cell. ठीक है, फिर क्या? डेंड्रोग्राम के बारे में बताना था। तो a dendrogram is a diagram representing a tree. The name dendrogram derived from the two ancient Greek word dendron which means tree and gramma जिसका मतलब होता है ड्राइंग। ठीक है, mathematical figure, it is a vascular response of clustering और classification analysis. फिर क्या? ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना था। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट was a stepping stone for the discovery of genetic material. Friedrich Griffith experiment were conducted with stratoscopes phenomena. During experiment, Griffith culture Spectrocorus pneumonia bacteria which should also pattern growth. ठीक है, one culture plate consists of smooth shining calories while other consist of rough calories. Are the difference was due to the presence of mucose coat in S strain bacteria, whereas in R strain bacteria lacked them. Based on the observation Griffith conducted, the R strain bacteria has been transformed by S strain bacteria. The R strain inherited some transforming principle from heat-killed and strain bacteria, which made them valuant, and he assumed this transforming principle as genetic material. ठीक है, सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। 8 में से कोई 5 करना था, हर क्वेश्चन 5 नंबर का। तो पहले क्या? बीटी कॉटन के बारे में बताना था। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? बीटी cotton is a transgenic plant which produce an insecticide to bollworm. BT cotton is produced by insecting cryogene from bacteria Bacillus thuringiensis to the plant genome by the help of transgenic technology. The genetically modified DNA in ascipient plant produces toxin in sap. When the insect attack on the plant and suck the sap from the plant, this toxin bind with the gut wall of the insect. This protein crack pores in the gut. This result in damage to the cell and block the gut, which lead to the death of the insect. Properties of BT cotton. So BT cotton is an insect resistant transgenic crop designed to combat the bollworm. BT cotton was created by genetically altering the cotton genome to express a microbial protein from the bacterium Bacillus thuringiensis. ठीक है, insert the transgene insect into the plant genome. एक मिनट,
चलो कंटिन्यू करते हैं। प्रोड्यूसेस टॉक्सिन क्रिस्टल दैट द प्लांट वुड नॉट normally produce, which when injected by a certain population of organism dissolves the gut lining leading to the organism death। फिर क्या डाटा रिट्राइवल सिस्टम के बारे में बताना था। तो द अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकली रिवेल्ड डाटा एक्सेसिबल बाय द डब्ल्यू इन इंक्रीजिंग at a very rapid rate. It is important for scientists to have an easy and efficient way of wading through the data and finding what is important for their research. Knowing how to access and search for information in the database is essential. Depending on the type of data at hand, there are two basic ways of searching. पहला usually descriptive word to search text database. Second, using a nucleotide or protein sequence to search sequence database. ठीक है। There are three important data retrieval system of particular relevance to molecular biologist। पहला क्या है? Intros at NCBI sequence retrieval system। फिर क्या तीसरा है? DBZTC। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या था? जेनेटिक कोड के बारे में बताना था। तो जेनेटिक कोड इज अ सेट ऑफ rule defining how the 4 letters code of DNA is translated into the 20 letter code of amino acid, which are the building blocks of protein. Genetic code is a set of 3 letter combination of nucleotide called codon, each of which correspond to a specific amino acid or stop signal. The concept The concept of codon was first described by Franz Crick and his colleague in 1961. During the same year, Marshall Nirenberg and Heinrich Matthey performed experiments that began defining the genetic code. फिर क्या properties of genetic code? तो codon are triplet, unambiguous, universal. Genetic code are non-overlapping. Codon are common class. Genetic code is degenerated. फिर अगला क्वेश्चन क्या है? ZDNA के बारे में बताना। तो ZDNA इज यूनिक लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA differing from the more common right-handed BDNA structure. Characteristics of ZDNA: left-handed down double helix, alternate sugar conformation, purine pyrimidine alternation, higher salt concentration. Function of ZDNA: transcriptional regulation, gene silencing, DNA repairing, chromatin remodeling, chromatin structure and organization, chromatin looping, epigenetic regulation। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था? थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो द थीटा mode of replication is a type of DNA replication mechanism observed in some prokaryotes such as E. coli. It is characterized by theta-shaped intermediates or bidirectional replication or leading standard synthesis, RNA primers, DNA polymers। ठीक है। थीटा mode of replication is a complex process that ensure accurate and efficient replication of bacterial genome। अगला क्वेश्चन क्या था? प्रोटीन डाटाबेस। तो अ प्रोटीन डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन इंक्लूडिंग देयर सीक्वेंस, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंटरेक्शन। दिस डाटाबेस प्रोवाइड अ centralized repository for protein facilitatory research, analysis and discovery in field like biochemistry, molecular biology and proteomics। ठीक है। टाइप ऑफ प्रोटीन डाटाबेस: पहला सीक्वेंस डाटाबेस, स्ट्रक्चर डाटाबेस, फंक्शन डाटाबेस, प्रोटीन इंटरेक्शन डाटाबेस और RT-PCR। ठीक है। नहीं क्वेश्चन कंप्लीट होता है प्रोटीन इंटरेक्शन डाटाबेस पे। अब अगला क्वेश्चन क्या है? RT-PCR के बारे में बताना। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शनल पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज अ लेबोरेटरी टेक्निक यूज्ड टू डिटेक्ट एंड क्वांटिफाई स्पेसिफिक RNA molecule in a sample. It is a powerful tool for analyzing gene expression, diagnosing disease and detecting viral infection। फिर क्या कौन कौन से स्टेप होते हैं RT-PCR के अंदर? पहला आइसोलेशन ऑफ RNA, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शनल जिसको RT शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और पॉलीमर चेन रिएक्शन PCR, फिर डिटेक्शन एंड क्वांटिफिकेशन, और अपलिफ्ट उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा RT-PCR का पूरा प्रोसेस। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन ऑफ बायोइन्फॉर्मर्स फॉर, थोड़ा सा कट गया है, नहीं कटा नहीं है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज mainly used to extract
knowledge from biological data through the development of algorithm and software. Bioinformatics is widely applied in the examination of genomes, proteomic, 3D structure modeling of protein, image analysis, drug design, and a lot more. A career in bioinformatics include suitable position in various hospital, healthcare companies research and development, फार्मास्यूटिकल एक लाइन छूट गया था ना, हाँ, कंपनीज फार्मास्यूटिकल कंपनीज, डाटा साइंस कंपनीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स, अप एंड कंपनीज related to biotechnology, drug designing and developing, bioanalytics, proteomic, clinical research and pharmacological, नहीं फार्माकोजेनिकल्स। फिर क्या बायोइन्फॉर्मेटिक्स का लिमिटेशन, तो द मेजर लिमिटेशन ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स अप्रोच टुवर्ड द सर्च फॉर न्यू सेलुलोज गिवन आर कौन कौन से होते हैं, पहला लेस एबिलिटी फॉर स्पेसिफिक एंजाइम कैरेक्टर्स लाइक एंजाइम एक्टिविटी, थर्मोस्टेबिलिटी, etc, often based on known enzyme homology, and second complex microbial community harpening cellulose enzyme। फिर सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें इसके अंदर चार में से कोई भी दो करना था। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द वेरियस मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट इज मोस्ट एक्सटेंसिवली ऑब्जर्व एट इनिशिएशन of transcription. Thus the gene expression during transcription initiation is affected by regulation. The regulation usually taking place in the expression of the RNA polymers at the promoter site. This affect the accessory protein which bind to the recognition right. This accessory protein can regulate or promote site in two ways। ठीक है, positive regulation by activator and negative regulation by repressor of nerve। The operator is situated right next to the promoter where the regulation bind to control its entire function। mechanism कैसे कैसे होता है, पहले ट्रांसलेशनल इनिशिएशन, फिर रेगुलेशन प्रोटीन, फिर इंड्यूसर्स, फिर ऑफरवर्ड्स, और उसके बाद कंप्लीट ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर इंडस्ट्रियल एंजाइम, गिव एंड अकाउंट फॉर इंडस्ट्रियल एंजाइम प्रिस्क्राइब इन योर सिलेबस, डिस्क्राइब देयर source, function and application। तो various enzymes are produced by mechanism for industrial use। The mechanism have to produce extracellular enzyme in higher amount, and the produced enzyme have to be safe, stable and more active। The microbial enzyme with the described properties can be produced by optimizing fermentation conditions। Some industrial enzyme used together for the some purpose like amylase, lipase and protease used in detergent formulation and co-produced together in a single fragmentation to reduce the cost and to maintain the enzyme stability। ठीक है, उसके बाद ये एक एंजाइम के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो इसके सोर्स के बारे में बता सकते हो और इसके फंक्शन के बारे में और इसके एप्लीकेशन के बारे में भी बता सकते हो। ठीक है, फिर क्या, तीसरा क्वेश्चन, राइट एन essay on protein sequencing। तो protein sequencing is a partial process of determining the amino acid sequence of all or post of a protein or peptide that may serve to identify the protein or characterize this post translational modification। Typically partial sequencing of a protein provides sufficient information to identify it with reference to database of protein sequence derived from the conceptual translation of gene। The two major direct method of protein sequencing पहला क्या है, are mass spectrometry method and how the most widely used for protein sequencing and identification, but Edmund degradation remains a valuable tool for characterizing of protein and sequence। ठीक है, protein sequencing has numerous applications in various fields including medicine, biotechnology and agriculture। For example, protein sequencing can help identify, discuss biomarkers, develop new drugs and improve crop yield। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन क्या था, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट।
तो पहले वही लिखेंगे, डीएनए एप्लीकेशन इज इन प्रोकैरियोट्स सच एज बैक्टीरिया एज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स मल्टीपल एंजाइम एंड प्रोटीन हेयर स्टेप बाय स्टेप ओवरव्यू ऑफ द मैकेनिज्म। पहले क्या होता है, स्टेप 1 इनिशिएशन होता है, इसके अंदर ये 3 प्रोसेस होते हैं। स्टेप 2 अनक्वाइंडलिंग होता है, उसके अंदर 2 प्रोसेस। स्टेप 3 सिंथेसिस, उसके अंदर 3 प्रोसेस। स्टेप 4 इलोंगेशन, उसके अंदर 2 प्रोसेस। स्टेप 5 फॉर टर्मिनेशन, उसके अंदर 3 प्रोसेस। और आगे बढ़ते हैं अब डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। तो प्रोकैरियोटिक में ये होता है और यूकैरियोटिक में ये होता है। आप ऐसे क्या कर सकते हो, बीच में एक लाइन लगा के दोनों को डिस्टिंग्विश करके आराम से बता सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पूरा पेपर कंप्लीट होता है। अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।